Good evening, all of you. How's your study? Is it going good? How's your optional going on? So, how many of you have completed your socio-cultural anthropology? Did you complete your socio-cultural anthropology? Okay. See, socio-cultural anthropology is as important as physical anthropology because what people used to do is they used to focus on one part, physical anthropology, and they used to attempt a lot of questions from physical anthropology, and they used to leave social socio-cultural anthropology. Okay, so that is not the right approach. If you want to score good marks, I would suggest that you should be thorough with entire optional syllabus. You should be thorough with entire optional syllabus. आपका जो भी optional का पूरा syllabus है, you should be knowing all your syllabus. That is very much required. That is very much essential. So you keep in mind this that you have to cover your entire syllabus. ठीक है? So I'm assuming that you have read socio-cultural anthropology, and with that we'll discuss ki you know what they are doing now. They are interlinking many concepts and they are asking questions. I hope you agree with me. They are interlinking various concepts, right? पेपर वन पेपर टू के कॉन्सेप्ट्स लिंक करेंगे या फिजिकल एंड सोशो कल्चरल के कॉन्सेप्ट्स लिंक करेंगे एंड दे आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ इट. ओके, सो व्हाट वी विल डू टुडे, we will discuss these things. And more than that, when you don't have content, it is better to interlink the concepts which are given in the syllabus itself. Concepts which are given in the syllabus itself, so that कि आपको बहुत ज़्यादा content find out करने की ज़रूरत ना पड़े. You can link the concepts given in the syllabus and you can write more holistic answer. You know, many times people say that you should write thinkers. You should write thinkers. But लाए कहाँ से thinkers? ये भी तो प्रॉब्लम है कि आप मतलब ऐसा लाइक इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑल्सो. इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेंबर लॉट ऑफ कंटेंट. So what you need to do, so I'm telling you the importance of linking these topics. It is not possible to remember a lot of information. It is not possible to write down each and everything in your notes. So what you need to do is you need to interlink these concepts in your mind, और जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो you just mention the fact, okay, this can be linked with this, this can be linked with this topic, this can be linked with this topic, this can be linked with this topic. So if you do that, it will be very much easy for you to write a very good holistic answer. Okay, first a. Second, you can include more thinkers in your answer. Third, your answer looks balanced, with which you can get more marks. ठीक है. Four, you need not read a lot of books, मतलब you need not run behind the content a lot, because what you are trying to do is you are trying to use the content which you have read in one topic, and you are using that content in many other topics. Fifth important thing, that if there is some unexpected question, if there is some unexpected question, you can tackle that question if you have the logic of interlinking the concept. I'll tell you just one example. Okay, yes. um, One example I'm telling you, this was 2018 CSC 2018. They asked Andamanese tribals in Andaman Nicobar Island. So ask this. Okay. So if they are asking this question, I don't know what exactly to write because it is not mentioned in the syllabus. But if you are if they are asking about any tribe, what do they expect? They expect tribal society, tribal polity, tribal economic organization, religion, culture, and what are their current problems, right? So tribal society में क्या आएगा, right? कि society किस type की है? First of the, like I wrote, what are the tribal divisions there?
देन मैंने लिखा कि बैंड टाइप सोसाइटी है, हंटर गैदरर्स है, राइट. आई एम एक्सप्लेनिंग विद द एग्जांपल, आर यू गेटिंग इट? सो आई एक्सप्लेन दैट कि हंटर गैदरर्स है, बैंड टाइप सोसाइटी है, दिस इज द पॉपुलेशन. देन आई एक्सप्लेन दिस इज द मैरिज, दिस इज द मैरिज सिस्टम, दिस इज द फैमिली सिस्टम. तो बैंड टाइप सोसाइटी है, हंटर गैदरर्स है. सो ये सब हो गया, फैमिली हो गया. देन दे प्रैक्टिस इकोनॉमी कैसी है, हंटर गैदरर है. सो हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी है, फिशिंग इकोनॉमी है, राइट. आई एक्सप्लेन. ओके. देन पॉलिटी कैसी है, if there are hunter gatherers and band type society, elders elders are given responsibility, elders are given responsibility for the polity. There is no established political system. Religion, they believe in animism, they believe in animism, right. So I wrote answer like this. Don't you think that this is this a like even I did not know anything, still I came up with this answer? Don't you think this is the right approach? Or I may have got good marks, not even if like मुझे 6 marks नहीं मिले होंगे, but I may have got at least 4 marks. I may not have got 6 marks, but I may have got 4 marks. So what I did, I just followed what is given in the syllabus. So when I tell you that you need command over your syllabus, I mean this. ठीक है. So what we do today, that we'll see which concepts can be interlinked with other concepts in the syllabus. This will be a very short lecture. I'll take just 10 minutes. I'll just take just 10 minutes, focus, and we'll finish fast. ठीक है. So 1.1, 1.2 and 1.3, these are very straightforward. ठीक है. 1.1 meaning scope, and actually 1.1, 1.2, 1.3 में बाकी सारा सिलेबस का कंटेंट आप उसमें लिख सकते हैं. So whatever you learn from other topics, you can write in 1.1, 1.2, 1.3. ठीक है. Because 1 point इसका कोई अलग से कंटेंट नहीं. Whatever you learn in this syllabus, you will write that in 1.1, 1.2, 1.3. ठीक है. Now come to topic of culture, the concept and characteristics of culture. Now इसमें क्वेश्चन आ सकता है कल्चर पैटर्न का, and I think they have asked that question last year. Okay, culture pattern. Now, culture pattern as a concept has been given by Ruth Benedict. Ruth Benedict. Now, whether you learn this concept here or you learn that concept in topic number 6 under culture personality school. Culture personality school के बारे में आप पढ़ेंगे culture pattern. So, while writing characteristics of culture, you just mention culture is pattern. Draw a diagram there. Draw a diagram there. समझ रहे हैं कैसे लिंक करना है? हाउ आई एम लिंकिंग दिस, आर यू गेटिंग इट? ओके. सो उसका उतना ही रेलेवेंस है, ज्यादा नहीं है. ठीक है. देन कल्चर रिलेटिविज्म. कल्चर रिलेटिविज्म, दिस कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड at multiple places. Culture relativism. Culture relativism is linked in the many topics of paper too. जैसे ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट में, यू कैन राइट व्हाई एंथ्रोपोलॉजी सूटेड टू डू द ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी टेक्स इन मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज. Because of the culture relativism is one of the fundamental feature of the anthropology. ठीक है. So you can write that. Culture relativism is again linked with cognitive anthropology. Culture relativism is linked with, also you can suggest in chat box कि कौन से टॉपिक्स कैसे लिंक किए जा सकते हैं. ठीक है. So culture relativism is also linked with cognitive anthropology, क्योंकि cognitive anthropology भी यही बोलता है कि ईच एंड एवरी कल्चर के लोग उनके दिमाग में कुछ अलग से सोचते हैं. Isn't it? So they also say the same thing, right? Then when you are writing about this formalist and substantivist debate,
सो देयर ऑल्सो सब्सटैंटिविज्म में हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी टॉक इन सब्सटैंटिविज्म, कि भाई हर ट्राइबल्स अलग अलग है, उनको एक एंगल से स्टडी नहीं किया जा सकता है। वहां पे यू कैन राइट वेरियस ट्राइबल्स के एग्जांपल्स। few tribals they believe few tribals they believe in hills, they believe in the hills, they live there, they think that there is god, so they do not believe in the formal economy, formal economy, इकोनॉमी के ट्रांजैक्शंस में बिलीव नहीं करते हैं। तो कल्चर और इकोनॉमी को वहां पे लिंक कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी मूविंग फॉरवर्ड, टॉपिक नंबर 2.2, यहाँ पे जो आपका सोशल इंस्टीट्यूशंस है, सोशल इंस्टीट्यूशंस, Malinowski has talked a lot about social institutions. Also, Radcliffe Brown. See, Radcliffe Brown has talked about social structure. Even this time, they asked the question: Radcliffe Brown's views on status, role, and social institutions. Radcliffe Brown's views on status, role, and social institutions. This time, they asked this question, right? So, institutions में Malinowski has worked a lot. Malinowski has worked a lot, and Radcliffe Brown has also worked. Radcliffe Brown ने भी इसमें काम किया है, ठीक है। आप उसमें सर के भी जब हैंड रिटन नोट्स पढ़ते हो उसमें आपको ये देखने मिलेगा, ठीक है। देन दिस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी लिंक्ड अगेन यहाँ पे। वन ऑफ द मेजर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया इज कास्ट, कास्ट के बेसिस पे है, कास्ट के बेसिस पे है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ओके। दिस इज लिंक्ड टू पेपर 2, दिस इज लिंक्ड टू पेपर 2, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, दिस इज लिंक्ड टू पेपर 2। इसमें दूसरा एक आता है स्टेटस एंड रोल, स्टेटस एंड रोल, status and role, status and role में there is ascribed status and achieved status। ascribed is by birth, by birth you have got some status and you have got some duties, role। varna system, can you link varna system here? varna system ascribed status नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक वर्णा में जन्म लेते हो तो आपको एक पर्टिकुलर स्टेटस मिलता है, राइट। दिस इज वन एग्जांपल, यू कैन लिंक पेपर 2 को मैंने पेपर 1 से लिंक कर दिया, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू लिंक। आ गया कंटेंट, उधर का कंटेंट यहाँ पे आ गया, यू हैव गॉट इंक्रीज्ड कंटेंट। लिख दीजिए यहाँ पे एमएन श्रीनिवास का नाम लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैरिज, मैरिज, लॉ ऑफ मैरिज, दिस इंसेस्ट टैबू, इंसेस्ट टैबू जो है मतलब 2.3 एंड 2.4 आर इंटायरली इंटरकनेक्टेड ओनली। 2.3 एंड 2.4 बहुत ज्यादा इसमें कनेक्शन है, तो एंटायर 2.3 एंड 2.4 इज कनेक्टेड ओनली, ठीक है। ये जैसे टाइप ऑफ मैरिज से टाइप ऑफ फैमिली हो जाती है, जैसे मैरिज है वैसे फैमिली हो जाती है। दिस टाइम दे आस्क द क्वेश्चन अबाउट कि रूल ऑफ रेसिडेंस एंड रूल ऑफ रेसिडेंस इज एंड दिस टाइप ऑफ मैरिज, प्रिंसिपल्स ऑफ मैरिज एंड रूल ऑफ रेसिडेंस, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा था। सो दिस इज वेरी इंटरकनेक्टेड, ठीक है। देन फैमिली, फैमिली ये टू एक्सप्लेन दिस type or like universality of family also, these kibbutz and all these examples are used, kibbutz, Iravati Karve, and all this is applicable in 2.3 marriage also, okay। 2.3 marriage में जो है most of these things they are here in family also, ठीक है। kinship, kinship का जो है this descent, descent and alliance theory, alliance theory जो है it is linked with Levi Strauss, who is structuralist। his binary views, his binary views, his binary views, structuralism is linked with alliance theory, binary opposition,
He talked about binary opposition, us versus they. Okay, so women should come from outside. That is the kind of alliance theory is there, right? So alliance theory में you can use Levi Strauss. So entire alliance theory में हम ज्यादातर लेवी स्ट्रॉस के बारे में ही लिखते हैं anyway. ठीक है. Then economic organization. See substantivist debate में substantivist के अंदर you can write major things जो ट्राइबल करते हैं, जो कल्चर ट्राइबल कल्चर है, बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं. ठीक है. देन इसमें ज़्यादा इंटरकनेक्शन करना बाकी डिफिकल्ट है, बट दिस टाइप ऑफ इकोनॉमीज, सो इफ दे आस्क यू अबाउट अ पर्टिकुलर ट्राइब, यू शुड नो. जैसे तोड़ा ट्राइब विच इज देयर इन नीलगिरीज, ठीक है, दे परफॉर्म पैस्टोरलिज्म. पैस्टोरलिज्म तो वो पैस्टोरलिज्म करते हैं. फिशिंग कोई कम्युनिटी करती होगी. हंटर गैदरर्स कौन है? एग्रीकल्चर कौन सी कम्युनिटी करते हैं? यू शुड नो थ्री फोर एग्जाम्पल्स. ओके, और रीजन वाइज एग्जाम्पल्स. ठीक है, रीजन वाइज एग्जाम्पल्स. ओके, देन उसके बाद जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड हाँ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज वेरी बिग रोल ऑफ मैलिनोस्की. मैलिनोस्की हैज वर्कड फॉर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड मतलब he has worked in this discipline. Okay, he has worked in this discipline. Okay, so you check this also. मैलिनोस्की का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है. मैलिनोस्की का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक सिस्टम में. सो एक बार आप चेक कर लेना. इसका एक बुक है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. यस, ऑफ कोर्स, कुलारिंग. थैंक यू. कुलारिंग में है. यू कैन कोट मैलिनोस्की इन कुलारिंग, ट्रोब्रियन आइलैंडर्स, एंड दे आस्क दिस क्वेश्चन आल्सो. कुलारिंग का क्वेश्चन पूछा है इस टाइम. दे आस्क इन 2019, दे आस्क इन 2019, sorry 2022. कुलारिंग. ओके, सो कुलारिंग ट्रोब्रियन आइलैंडर्स में जो कुलारिंग का जो एक्सचेंज होता है, दैट यू कैन राइट इन सब्सटैंटिविज्म के आपके जो आर्ग्यूमेंट्स है वहां पर भी आप लिख सकते हो. ठीक है, एंड ही हैज कंट्रीब्यूटेड, सो राइट अबाउट हिम. देन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल. सो जितनी 5 टाइप की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बैंड है, ट्राइब है, चीफडम है, वहां पे भी यू कैन राइट दिस स्ट्रक्चर्ड आंसर. बैंड है तो सोसाइटी किस टाइप की है, इतने लोग रहते हैं, 25-30 लोग रहते हैं, उनमें मैरिज इस टाइप का है, फैमिली इस टाइप की है, राइट. सो ये है. तो उनमें इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, वेदर दे परफॉर्म एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म, हंटर गैदरर्स. सो अगेन टॉपिक नंबर 3 and topic number 4 can be interlinked. Topic number 3 and topic number 4 can be interlinked. इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, बिकॉज इकोनॉमी अगेन डिसाइड्स पॉलिटी. क्योंकि स्टेबल इकोनॉमी है, ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी है. एग्रीकल्चर जब होता है, देन यू आर लिविंग, so many people, you are living at one place. When the Neolithic period started, ठीक है, then agriculture came. When the agriculture came, we were living at one place. Then the population at one place increased. And when the population increased, then we required something in the form of law and order, something in the form of social control, isn't it? So then only we required social control, otherwise it was not required. जब ज्यादा लोग एक जगह पे आ गए, तभी हमको सोशल कंट्रोल की जरूरत पड़ी ना, otherwise it was not required. Okay, so this is how you can interlink, and you can write about 2.3, 2.4, मैरिज कैसा है, फैमिली कैसी है. ओके, अभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं. आप नोट्स बना के बाजू में हट जाइए, नोट्स बना दीजिए, बाजू में जाइए, नोट्स बना दीजिए, बाजू में जाइए. ठीक है. और यस, ऑफ कोर्स, अभी लाइक वी वर प्लानिंग दैट डिकोड थिंग, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी.
उसमें कवर हो जाएंगी। सो बिकॉज वहाँ पे फैकल्टी है तो दे विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग। ठीक है। सो भूल तो जाते हैं लेकिन पढ़ना पड़ता है। ठीक है। देन पावर अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। पावर अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। पावर अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, इसमें ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल अगेन बिगर कंट्रीब्यूशन ऑफ, बिगर कंट्रीब्यूशन ऑफ मैलिनोस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन। मैलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। So Malinowski has written that book Crimes and Savages, Crimes and what is his book name? Crimes and Barbarism in Savage Society, something like that. I'm forgetting his book name. So Malinowski has written that book, and in that book he has explained about social control mechanism in the tribals, social control mechanisms in the tribals. Okay, so वो देख लीजिए आप। तो वहां पे अगेन जो डिसेंट थियरिस्ट थे, like Evans Pritchard worked in Africa. So he talked. His name is African Political System. His book, he has written about African political system. So he has contributed a lot. So he talks about decent theory also, and उन्होंने इसमें भी बहुत बड़ा contribution दिया है। ठीक है। Then topic number 5 religion. Topic number 5 religion. Religion में evolutionary theory. It is like entire thing is what, जो भी ईबी टाइलर ने बोला है, ईवी टाइलर ने बोला है कि रिलीजन ऐसे 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 इवॉल्व हुआ, दैट ओनली यू हैव टू राइट इन द इवोल्यूशनरी थियरी ऑफ रिलीजन। ठीक है। देन साइकोलॉजी में तो आप फ्रूइड का लिखेंगे। देन फंक्शनल थियरी, फंक्शनलिज्म, साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म, फंक्शनल अप्रोच। इन फंक्शनल अप्रोच अगेन यू विल राइट अबाउट मैलिनोस्की एंड रैटक्लिफ ब्राउन। इन फंक्शनल अप्रोच यू विल राइट अबाउट मैलिनोस्की एंड रैटक्लिफ ब्राउन, इजंट इट? इन्हीं को लिखेंगे ना, और क्या लिखेंगे? इन फंक्शनल अप्रोच यू विल राइट अबाउट मैलिनोस्की एंड रैटक्लिफ ब्राउन, राइट? सो ज्यादा हो गया क्या? am I explaining too much? See, all these things should be on your fingertips. All these things should be on your fingertips, and then only you can write a very very good answer. So that's why I'm explaining. If you have not covered these things, that means you are not going on a right path. ठीक है? You are not going on a right path. Then forms of religion in tribal societies. Forms of religion in tribal societies. Again, this can be used while writing answers in topic number 4. टॉपिक नंबर 4 जो है बैंड, चीफडम, किंगडम, यहाँ पे रिलीजियस सिस्टम क्या है, यू कैन राइट अबाउट दैट आल्सो। सो यू कैन टेक दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द 5th टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ रिलीजन इन ट्राइबल सोसाइटीज। फॉर्म्स ऑफ रिलीजन इन ट्राइबल सोसाइटी, समझ में आ गया? देन एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज। अभी फ्रेजर जो है, फ्रेजर इज एंटायरली कनेक्टेड विद रिलीजन। James Frazer is connected with this magic, science, and religion. He has distinguished. He has talked about myth. He has talked about myth and rituals. So Frazer is connected. He has talked about taboo. So एक एक कोई भी टॉपिक में एक दो बड़े बड़े थिंकर हैं, उनके नाम आने ही चाहिए। इफ यू आर राइटिंग अबाउट रिलीजन, समहाउ यू ब्रिंग द फ्रेजर। ओके, सो यू राइट अबाउट फ्रेजर। फ्रेजर के बुक का नाम क्या है? द गोल्डन बाउ। बुक का नाम लिख दीजिए, द गोल्डन बाउ। फ्रेजर है, फ्रेजर ने मैजिक, साइंस, रिलीजन या ऐसा कुछ तो भी किया है। सो दिस इज हाउ यू इंटरलिंक द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। उसके बाद एल एच मॉर्गन इज रिलेटेड विद दिस किन टर्मिनोलॉजी। एल एच मॉर्गन इज रिलेटेड विद किन टर्मिनोलॉजी। एल एच मॉर्गन हैज वर्कड डिस्क्रिप्टिव and classificatory terminology. एल एच मॉर्गन has worked a lot for kin terminology. ठीक है। देन हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म में बोआस इज लिंक्ड विद योर कल्चरल रिलेटिविज्म। बोआस लिंक्ड विद कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म से कनेक्शन है बोआस का। ठीक है। देन फंक्शनलिज्म, मैलिनोस्की और रैटक्लिफ ब्राउन का तो हर टॉपिक में आता है। टॉपिक नंबर 8 जो फील्ड
वर्क है, फील्ड वर्क में वहां पे भी है Radcliffe Brown. Participant observation has been started by Radcliffe Brown. So you can link this with eighth topic also. Eighth topic also. ठीक है. Then structuralism, Levi-Strauss. Levi-Strauss has worked binary opposition theory. Then Levi-Strauss you can quote in symbolism also. Levi-Strauss you can quote in alliance theory. In alliance theory. ठीक है. Then culture personality school you can quote Ruth Benedict. Ruth Benedict. Now, Margaret Mead has talked about coming of age in Samoa. Coming of age in Samoa. She has explained the impact. She has explained the impact of culture on the adolescent. Impact of culture on the adolescents. This can be linked with the topic number 10. This can be linked with topic number 10 because there are phases of growth. Phases of growth. Phases of growth. Phases of growth में there is adolescent stage also. There is adolescent stage also. So this can be linked with that. Okay. उसके बाद जो है your Julian Stewart has talked about culture ecology. This is linked with 9.7. 9.7 culture ecology, right? Culture ecology can be linked with 9.7. ठीक है. उसके बाद symbolic and interpretative theories. Victor Turner is entirely this rites of passage, liminality. These concepts are related to religion, rites of passage and liminality. So Victor Turner is linked with that. His symbolism, ठीक है. Then culture, language and communication. Seventh topic is linked with your linguistic anthropology. Seventh topic is linked with your linguistic anthropology. Okay. Then seventh topic में there is one other question they might ask you is Sapir-Whorf hypothesis. Sapir-Whorf hypothesis is linked with cognitive anthropology. Cognitive anthropology also because Sapir and Whorf started in a different way how culture can be studied. Because for every person of every culture interprets particular thing in different manner. Interprets a particular thing in different manner. मतलब बाम्बू है, मेरे लिए बाम्बू इंपॉर्टेंस नहीं है तो अगर 10 टाइप के भी बाम्बू है तो मैं बोलूंगा बाम्बू है. लेकिन अ ट्राइबल पर्सन, अ पर्सन इन दैट सोसाइटी जिसके लिए बाम्बू इंपॉर्टेंस है, दे विल डिस्टिंग्विश ऑल दिस 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैम्बूज. मेरे लिए कलर रेड रेड है तो मैं रेड बोल दूंगा. बट अ पर्सन हु हैज टू पिक अ डिफरेंट वेज, ये रेड वो रेड, ऑरेंज का उसमें ये होगा, मरून का कुछ होगा, डिफरेंट रेड्स. पिंक है तो डिफरेंट शेड्स ऑफ पिंक. ठीक है. सो दे स्टार्टेड दिस सापिर हुड, दे हैव स्टार्टेड एंड दिस यू कैन राइट इन टॉपिक नंबर 7 ऑल्सो. एंड वन पॉइंट जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है उसमें ऑल्सो यू कैन राइट. ठीक है. देन फील्ड वर्क ट्रेडिशन में तो आपको सब कुछ लिखना है. दिस टाइम दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन अबाउट फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी. इस बार पूछा ना उन्होंने 8th क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड 8th और 7th क्वेश्चन में फील्ड वर्क ट्रेडिशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, हाउ दिस इवॉल्व्ड. ठीक है. सो फील्ड वर्क तो सबका ये है. देन टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन में ओरल हिस्ट्री का मतलब इसमें यू शुड राइट this all these tools of data collection has been used by one or the other anthropologist. Here also you get the opportunity to interlink. Secondary sources of information has been used by Ruth Benedict. Oral history and life history has been used by Cora Dubois. Genealogy has been used by W.H.R. Rivers. Participant observation has been used by most of the anthropologists, Malinowski and all those. Interview has been used again by somebody else. So this is how you can interlink these concepts.
एंड आप जितना ज़्यादा इंटरलिंक करेंगे उतने आपको मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, आपका आंसर भी अच्छा आएगा, आपका स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। और स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे टू ईच एंड एवरी पॉइंट, आपको लिखने के लिए यू हैव अ वेरी गुड कंटेंट, राइट? So this is all about interlinking of the topics we will cover। अभी नेक्स्ट वीक से हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कवर करेंगे। व्हेन विल कवर द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, देन सोशो कल्चरल और फिजिकल का कनेक्शन कैसे किया जा सकता है, विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर। ठीक है? सो उसके साथ हम यू विल गेट हेल्प थ्रू दैट आल्सो। डिकोड से भी जो भी है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड। ठीक है? सो सोशो सोशो का ही लिंकिंग था आज, सोशो और फिजिकल का लिंकिंग बाद में देखते हैं। ओके देन, गुड नाइट।